Good morning, students. I am Dr. Harmeel Singh Chahal, Principal, Swift School of Pharmacy, Rajpura, Punjab. Today, we will talk about two very important terms. One is AI, and another is the resistance to antimicrobial agents. So these are two terms we will discuss today. You may not be aware that antimicrobial resistance is a threat to human life. It is a major cause of deaths today. It may be due to discriminate use of antibiotics or antimicrobial agent, you can say, that may be in the human beings, in the animals, or even in the agriculture. Where we will learn how this resistance is produced, how it is produced, and how we can lower it or we can decrease it, the cases of antimicrobial resistance. And another thing is the AI, that is the artificial intelligence. Today we will discuss. We will club these two. I will try to club these two. How, with the help of this AI, we can minimize the resistance to antimicrobial agent. So let us start with what is the resistance to antimicrobial agents. So if we talk about resistance, so हमें पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है. So what is the meaning or what actually it is? So when the microorganism does not respond to the antimicrobial agent, then which would normally kill or inhibit its growth. So normally क्या होता है कि whenever we get infected with some microorganism, then normally our physician or doctors they prescribe the antimicrobial agent. And any antimicrobial agent, a number of antimicrobial agents are available nowadays. They are very much helpful to us to cure the infections. So, but sometimes they may not be effective. They cannot cure the infection. हमें कितने भी वो antimicrobial agent patient को देते रहें, वो cure नहीं होती. So this stage is the resistance. So normally whenever we take a antimicrobial agent, so it can kill or inhibits the growth of the microorganism. But in case of resistance, they are not effective. They cannot kill, they cannot inhibit the growth. And this stage is the resistance to antimicrobial agent. And normally it is of two types. Like it may be natural or acquired. So first one is the natural resistance. So some microbes have always been resistant to certain antimicrobial agents. So they may lack the metabolic process or the target site which is affected by a particular drug. For example, gram-negative bacilli are normally unaffected by penicillin G. नेचुरल रेजिस्टेंस में कैसे होता है? ये नेचुरली होती है. इसमें लाइक विद दिस एग्जांपल penicillins are very much affected gram positive bacilli only, not against the gram negative. उसका कारण क्या है? यू मे बी अवेयर कि उसकी जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव की वो थिक होती है, वेयर एज ग्राम नेगेटिव बैसिलाई की जो सेल वॉल है वो इतनी थिक नहीं होती. सो जो पेनिसिलिन है वो ग्राम पॉजिटिव को ही अफेक्ट करती है और ग्राम नेगेटिव को नहीं करती. एंड लाइक another example, mycobacterium tuberculosis is insistent to tetracyclines. So इस टाइप की जो रेजिस्टेंस होती है ये नेचुरली होती है, but it does not pose a significant clinical problem because we have some other alternates, we have other choices, we can do some other antibiotic against with जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेंसिटिव होता है, वो अच्छा क्योर कर सकता है. सो दैट इज वाई इसको हम ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं मानते. And the next one is, this is the main thing, that is the acute resistance. What happens in this? Microorganisms that initially respond to antimicrobial agent later
develop resistant to some antimicrobial agents due to the use of an antimicrobial agent over a period of time. So what happens in this? जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिया है, he started taking the antibiotic, तो वो इन्फेक्शन उसका क्योर हो गया, बट उसके बाद सपोज उसको फिर कभी इन्फेक्शन हुआ, फिर उसको एंटीबायोटिक दिया, बट इस टाइम वो उसका अफेक्ट नहीं हुआ. सो बट इट मीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अक्वायर्ड द रेजिस्टेंस. जो पहले सेंसिटिव था अब वो रेजिस्टेंस हो गया. सो दिस कैन हैपन विद एनी माइक्रोब एंड इज ए मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम. जैसे मैंने आपको बताया था, जो नेचुरल है रेजिस्टेंस वो इतना क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस टाइप इज द मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम. जैसे गोनोकोकाई क्विकली डेवलप्स रेजिस्टेंट टू सल्फोनामाइड्स बट ओनली स्लो एंड लो ग्रेड रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन. सो जो ये टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, सो ये सल्फोनामाइड्स एक दीज आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और पहले ये इसको सेंसिटिव होता था, बट नाउ इट इज टोटली रेजिस्टेंट. सो एंड इट मे बी डेवलप्ड बाय म्यूटेशन और जीन ट्रांसफर. अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे डेवलप होती है, हाउ इट डेवलप्स, so there may be a mutation or gene transfer. So what is the mutation? Mutation is a permanent alteration in sequence of DNA. So इसमें जो DNA है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर परमानेंटली चेंजेस आ जाती है, अल्ट्रेशन आ जाती है उसकी सीक्वेंसिंग में, and it may occur in a single step or multi-step. In a single step, what is single step? So it may confer high degree of resistance. एक ही स्टेप में हो जाती है और हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस है, एंड इट इमर्जेस रैपिडली, वेरी फास्टली इट डेवलप्स. फॉर एग्जांपल एंटीरियोकोकाई टू स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. और इट मे बी ए मल्टी स्टेप दैट अकर्स इन मोर देन वन स्टेप. एक से ज्यादा स्टेप में होती है. सेंसिटिविटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली इन ए स्टेप वाइज मैनर. जैसे एक स्टेप हुआ तो उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, नेक्स्ट स्टेप में और कम होगी, उससे नेक्स्ट में और कम होगी. स्टेप वाइज मैनर में वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है. फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लोरोफेनिकोल इज डेवलप्ड बाय मैनी in many of organisms in this manner, or you can say in the multi-step. So now what is gene transfer from जो first method है, gene transfer from one organism to another. What are the mechanisms? So there are some mechanisms, like first one is the transduction. So there is a transfer of DNA carrying a gene for resistance from one bacteria to another through the bacteriophage. So इसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस हो चुका है, रेजिस्टेंट हो चुका है ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका एक जीन दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है बाय बैक्टीरियोफेज. फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ स्टेप्लोरेसिस टू एंटीबायोटिक इज मीडिएटेड बाय ट्रांसडक्शन. दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस. एंड सेकंड वन इन द ट्रांसफॉर्मेशन. What happens in this? The resistance carrying genetic material that is released into the environment by resistant bacteria is taken up by another sensitive bacteria. So इसमें क्या होता है कि एक जो resistant microorganism है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है that may be released into the environment, and वो जो सेंसिटिव बैक्टीरिया जब उसको टेकअप करता है तो that also becomes a resistance. For example, penicillin G resistance in pneumococci. So you can see in the figure also. So RB means resistant bacteria. So it releases free DNA carrying gene for resistance into the environment. So that may be taken up by sensitive bacteria, which then becomes resistant to antimicrobial agent. Then there is another method, that is the conjugation. So it happens through the sexual contact, through the formation of the bridge or sex pilus in the microorganisms. So it is very much common among gram-negative bacilli.
Conjugation frequently occurs in the colon where a large variety of gram-negative bacilli come in close contact and they form bridges or sex virus and become resistant. For example, E. coli resistant to streptomycin. Then come to the development of resistance to antimicrobial agent. How it develops? There are some mechanisms why our microorganisms are becoming resistant. So there are some ways by which they become resistant. Number one, production of an activating enzyme. So they produce some enzyme. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसके जो एग्जांपल है स्टेप्लोकोकाई, गोनोकोकाई एंड ई कोलाई। सो दे प्रोड्यूस बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज एन एंजाइम so that can destroy some of the penicillins and cephalosporins. So जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एंजाइम है वो पेनिसिलिन्स या सेफलोस्पोरिन्स हैं जो हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। Secondly, an efflux pump mechanism. What happens with this? It is a mechanism that prevents the accumulation of the drug in the microorganism. So इससे क्या होता है कि there is a efflux pump जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट को अंदर जाना है, बट वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको इफ्लक्स कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो वहाँ वो अकोमोडेट नहीं होती इन द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो in this way it becomes resistant. For example, resistance of gram-positive and gram-negative bacteria to tetracyclines, chloramphenicol and macrolides. Third one is the decreased entry of antimicrobial agent into the organism due to alteration in the channel transporter required for its entry into microorganism. So sometimes what happens is जो antimicrobial agent है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करने के लिए उसको कोई चैनल या ट्रांसपोर्टर चाहिए, उसकी हेल्प से ही वो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है। बट समटाइम्स ड्यू टू सम चेंजेस इन दोज चैनल्स, दोज ट्रांसपोर्टर जो उसकी हेल्प करते हैं उनमें कोई चेंज आती है एंड देयर इज अ रिड्यूस्ड एंट्री। तो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है दैट कैन नॉट रीच इनटू द माइक्रोबियल एजेंट। एंड फोर्थ वन इज द अल्टरेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं सो दे फाइंड देयर रिसेप्टर्स और देयर बाइंडिंग साइट, दे बाइंड विद दो साइट्स एंड देन एंटर्स इनटू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। But sometimes there may be some changes in the binding sites, so they may not be able to bind with those sites. For example, change in penicillin binding proteins in case of certain pneumococci with decreased affinity for penicillins. तो जो penicillin binding proteins हैं उनमें पेनिसिलिन के साथ बाइंड करने की जो कैपेसिटी है, जो अफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। सो इन दिस वे पेनिसिलिन्स हैं वो उसके अंदर नहीं जा सकती। एंड लास्ट वन इज द एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। सो फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन यूटिलाइज प्री-फॉर्म्ड फोलिक एसिड विदाउट द नीड फॉर यूजुअल मेटाबॉलिक स्टेप्स। व्हाट हैपेंस इज दिस, एज यू आर अवेयर जो सल्फोनामाइड्स हैं वो फोलिक एसिड क्या है? इट इज द न्यूट्रिशन फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उसका फूड है, उसकी फीड है। सल्फोनामाइड्स जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं वो क्या करते हैं? सो दे इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड। सो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोलिक एसिड नहीं मिलता है तो उसकी या तो ग्रोथ इनहिबिट होती है या दैट मे बी किल्ड। बट समटाइम्स जो फोलिक एसिड है उसका कोई अदर सोर्स वहाँ अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको बताता हूँ कि सपोज वहाँ इन्फेक्शन होगी, उसमें पस है, तो पस में फोलिक एसिड होता है दैट मे बी यूज्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर इट्स ग्रोथ। तो उस केस में अगर हम सल्फोनामाइड देते भी रहेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। देन देयर इज अनदर टर्म
This is the cross resistance. So organisms that develop resistance to an antimicrobial agent may also show resistance to other chemically related antimicrobial agents. The cross resistance among antimicrobial agents could either be one way or two way. Cross resistance among tetracyclines and sulfonamides is usually two way. So इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज एक जो एंटीबायोटिक है वन कैटेगरी ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गया एंड समटाइम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरी टाइप है जो विच इज सिमिलर टू द केमिकली सिमिलर टू द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो उसमें भी रेजिस्टेंस आ जाती है. सो ये जो रेजिस्टेंस है वन वे और टू वे होती है. सो लाइक फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फोनामाइड्स इट इज यूजुअली टू वे, मींस जो टेट्रासाइक्लिन के लिए है वो सल्फोनामाइड के लिए भी है. You can see here tetracycline, doxycycline. Doxycycline is also a type of that tetracycline, and this sulfadiazine, sulfadoxy, sulfonamides are two ways. In the one-way resistance, it is seen between neomycin and streptomycin. Neomycin resistant organisms are resistant to streptomycin, but streptomycin resistant organisms may be sensitive to neomycin. This is one way. अगर नियोमाइसिन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंस होगा, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म वो नियोमाइसिन के लिए सेंसिटिव रहेगा, उसके ऊपर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो अफेक्टिव रहेगी. नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज हाउ वी कैन प्रिवेंट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस. एज इन द वेरी स्टार्टिंग मैंने कहा था कि इंडिस्क्रिमिनेट यूज के कारण हो रहा है, that may be in the humans, in the agriculture, in the veterinary. So these are some of the points. There should not be no discriminate and inadequate or unduly prolonged use of antimicrobial agents. So what happen normally जब हमें कोई इन्फेक्शन होती है तो we go to doctor, तो डॉक्टर हमें एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रिस्क्राइब करता है. इसमें क्या होता है कई बार इसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि यू हैव टू टेक फॉर 3 days, 5 days, 7 days डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ योर इन्फेक्शन. तो समटाइम्स हम क्या कहते हैं, या तो उसकी डोज प्रॉपर नहीं होती, जिस कंसंट्रेशन में उसको लेना चाहिए वो उस कंसंट्रेशन में नहीं लेते, या जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ उसका यूज है वो नहीं करते. सपोज डॉक्टर ने हमें कहा इट शुड बी यूज्ड फॉर 1 week, तो पेशेंट क्या करता है, ही स्टार्ट्स टेकिंग द मेडिसिन, ही टेक्स फॉर 3 days और 5 days, देन ही फील्स बेटर एंड ही डिसकंटिन्यूड. तो उसने वो उसका साइकिल पूरा नहीं किया. इन दिस वे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंट हो गया. और समटाइम्स हम विदाउट द कंसल्टिंग द एक्सपर्ट मींस फिजिशियन और डॉक्टर वी टेक एट आवर ओन, बिना सलाह लिए हम एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं. वो डॉक्टर नोज बेटर कि विच वन इज गुड, या उसकी कितनी डोज देनी है, कितने दिन के लिए देना है, हमें नहीं पता है, तो पेशेंट अपने आप ही लेना शुरू कर देता है. तो इन दिस वे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम रेजिस्टेंट कर रहे हैं. सेकंड, प्रेफर रैपिडली एक्टिंग एंड सिलेक्टिव, जिसको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं, वेयरएवर पॉसिबल. इट मींस नॉर्मली प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है उसको हम यूज करते हैं, बट वेयरएवर पॉसिबल तो हमें सिलेक्टिव प्रेफर करनी चाहिए और जो फास्ट एक्टिंग है उनको प्रेफर करना चाहिए. एंड थर्ड वन, यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स वेयरएवर prolonged therapy is undertaken, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस. जैसे कि हम जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस में कोई भी सिंगल ड्रग इफेक्टिव नहीं होता, they are very resistant or becoming more resistant. And fourth one is the infection by organisms notorious for developing resistance. So इसमें हम for example staph, E. coli, microbial tuberculosis, proteases.
तो इनमें वी हैव टू टेक केयर कि कौन सा एंटीबायोटिक है या कौन सा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उसको हमने यूज़ करना है. Now come to the second part of our today's talk, that is the role of AI. As nowadays AI is everywhere. Everywhere this term we use AI, artificial intelligence. So in this antimicrobial resistance we can take the help of AI. So with the use of AI we can reduce the formation of superbugs. So this is a very common term nowadays, superbugs. बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सुपरबग्स बन रहे हैं. सुपरबग्स मीन जिनके ऊपर किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट का अफेक्ट नहीं है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. सो जैसे हमने कुछ पहले मेथड्स स्टडी किए हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, एंड सिमिलरली अब हम देखेंगे कि एआई कैसे हेल्प कर सकता है. So artificial intelligence AI, it helps in detecting, protecting, monitoring and managing antimicrobial resistance more effectively. So ये हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रेजिस्टेंट है ऑलरेडी, या प्रोडिक्ट करेगा कि कौन सा हो सकता है, एंड देन इट्स मॉनिटरिंग and its management. So it will tell or it will help our physicians how to select or which one to be selected for that particular infection of the microorganism. So हम इसको अभी step wise देखेंगे. So first one is early detection of resistant infections. So AI systems analyze laboratory data and patient records to quickly identify resistant microorganisms. So ये हमें, क्योंकि ये बहुत सारा लास्ट डाटे को बहुत क्विकली एनालाइज कर लेता है. तो AI का हमें क्या बेनिफिट है कि बहुत सारे लास्ट डाटा को ये क्विकली एनालाइज करेगा और हमें बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा कि दिस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टूवर्ड्स दिस एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. सो इसके बेनिफिट क्या होंगे? फास्टर डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट डिसीजंस, रिड्यूस्ड स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस. सो हमें ये हेल्प करेगा कि हम उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे. और ट्रीटमेंट डिसीजन लाइक हमें पता लगेगा कि हम ये वाला जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है इसके अगेंस्ट जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है, एंड इट विल आल्सो रिड्यूस द स्प्रेड. जैसे हमने पहले कुछ मेथड्स पढ़े थे स्प्रेड के, तो वो भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं. सेकेंड इज प्रेडिक्टिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. So AI models can predict whether bacteria will resist certain antibiotics by analyzing genetic and clinical data of the patient. So उसको स्टडी करके एनालाइज करके ये हमें बताएगा कि ये वाला एंटीबायोटिक या ये वाला एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इट विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन और नॉट. Third one is the personalized treatment. So AI helps doctors choose the best antibiotic and dosage based on patient history, type of infection, resistance patterns. कि patient की history क्या है, कि पहले वो किसी में जो infection होती है वो early recover होती है नहीं होती ना. तो and secondly infection की type क्या, कौन सी type का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इन्फेक्शन कर रहा है उसके बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे एंड उसका रेजिस्टेंस पैटर्न्स के. सो दिस इम्प्रूव्स ट्रीटमेंट सक्सेस एंड रिड्यूसेस अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज. सो इसका जो पर्सनलाइज्ड है, एक जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जनरल होती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ AI वी कैन इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल पेशेंट के लिए कि उसके पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप के हिसाब से कौन सा एंटीबायोटिक है दैट विल बी मोर इफेक्टिव. एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप. सो AI सपोर्ट्स रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन हॉस्पिटल्स. जब वो चाहिए तो यूज़ करना है, नहीं चाहिए तो नहीं यूज़ करना है.
उसकी एक्यूरेट डोज, उसकी ड्यूरेशन, कितने देर के लिए यूज़ करना, तो इसमें भी हमें ये हेल्प करेगा। Then its functions, so it alerts doctors about inappropriate prescriptions and it recommends suitable antibiotics and reduce misuse and overuse. So overall ये हमें alert करता है how we can prevent, क्योंकि ये ज़्यादातर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो जो प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न्स हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो यूजर्स हैं, पेशेंट्स हैं, ये उनकी वजह से हो रही है। सो इट विल अलर्ट अस, हमें अलर्ट करेगा इन चीज़ों के लिए। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एआई इन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सो इससे रैपिड डाटा एनालिसिस होता है, फास्ट होता है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, फास्टर डायग्नोसिस एंड ड्रग डिस्कवरी में भी हेल्प करता है, बेटर पेशेंट आउटकम आते हैं, रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। देन लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जिस चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं ऑलवेज लिमिटेशंस भी होती हैं। सो इट रिक्वायर्स लार्ज एंड हाई क्वालिटी डाटा, बिकॉज इसमें जो भी हमें सजेस्ट करना है, डिटेक्ट करना है या पहले हमें बताएगा, वो सब चीज़ें इट डिपेंड्स ऑन द पास्ट डाटा। सो इट रिक्वायर्स ए लार्जर and high quality data, accurate data इसको चाहिए। Second, high implementation cost बढ़ सकती है इससे, and there may be some privacy and ethical concerns also, क्योंकि हम किसी एक डाटा को शेयर करते हैं तो उसका कई बार मिसयूज हो सकता है, तो इसमें कुछ प्राइवेसी या लीगल कंसर्न भी हो सकते हैं। And we also require the trained professionals, AI के जो trained experts हैं जो इस डाटा को प्रॉपरली मैनेज करना जानते हैं, तो वो उनकी भी हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। These are some of the limitation, but they may be improved in the coming days with the advancement of technology. In the last, as a conclusion, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ए मेजर ग्लोबल हेल्थ चैलेंज। तो मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में, नाउ इट इज बिकमिंग ए मेजर कॉज ऑफ डेथ्स आल्सो। सेकेंडली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस थ्रू अर्ली डिटेक्शन, प्रोडिक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ड्रग डिस्कवरी, सर्विलेंस एंड प्रॉपर एंटीबायोटिक मैनेजमेंट। सो कंबाइनिंग AI technology with responsible antibiotic use can significantly help in reducing the burden of antimicrobial resistance. So इसको हम प्रॉपर यूज करेंगे, इसके हम जो सुपरवर्क्स फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।